अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मार्केटिंग इनिशियल। टुडे our 10 class. Let's start. As we discussed in our previous class, consumer market and consumer behavior and its importance and application for the marketing process. Today that can influence the consumer decision regarding purchases will also be discussed in today's lesson. So let's start. So our topic is today consumer buying behavior, model of consumer behavior. Number 1 point है इसका, consumer make many decision every day. Most large company research consumer buying decision in greater detail to answer question about what consumer buy, what they buy. इसमें यही है कि रोज़ाना जो कंज्यूमर चीज़ें या प्रोडक्ट ख़रीद रहा होता है, जो कंपनीज है उस कंज्यूमर की नीड को या उसकी ज़रूरियात को जो है वो रिसर्च करते हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है। जी, तो मार्केट कैन स्टडी एक्चुअल कंज्यूमर Marketer can study actual consumer purchases to find out what they buy, where and why, how much. जो मार्केटर है वो ये स्टडी करता है असल में कि परचेज़रों को किस चीज़ की ज़रूरत है या तलाश है और कितनी उसको ज़रूरत है। यही हमने स्टडी किया सारा मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, यही होता है मॉडल ऑफ बिहेवियर कंज्यूमर। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट। ये है इसकी डायग्राम, मार्केट एंड अदर स्टिमुलाई, बायर्स, ब्लैक बॉक्स एंड बायर रिस्पॉन्सेस। चलें यहाँ से देखते हैं। मार्केटिंग स्टिमुलाई कंसिस्ट ऑफ 4 पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. अदर स्टिमुलाई इंक्लूड मेजर फोर्सेस एंड इवेंट्स in the buyer environment, economic, technological, political and cultural. All these input enter the buyer black box where they are turned into a set of observable buyer responses, product choices, brand choices, dealer choices, purchase timing and purchase amount. The marketer wants to understand how the stimuli are changed into response inside the consumer black box, which has 2 parts. First, the buyer characteristics influence how he or she perceives and reacts to the stimuli. Second, the buyer decision process itself affects the buyer behavior. This chapter look first a buyer characteristics as they affect buying behavior and then discuss the buyer decision process. So नंबर 2 पॉइंट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कल्चरल में आता है कल्चरल, स्ट्रक्चरल एंड सोशल क्लास। सोशल में आता है रेफरेंसेस, ग्रुप एंड फैमिली। पर्सनल में आ जाता है एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल में आ जाता है मोटिवेशन, perception, learning, beliefs and attitudes. And buyer में आ जाता है cultural, social, personal and physiological. Let's discuss cultural. Cultural factor exert the broadcast and deepest influence on consumer behavior. The marketer need to understand the role played by the buyer cultural, subculture and social class. 1. Number 2 is social factor. A consumer behavior also is influenced by social factors such as the consumer, small group, family and social roles and status. Groups. Many small groups influence a person's behaviors.
Group that have a direct influence and to which a person belongs are called membership group. In contrast, reference group serve as direct face-to-face or indirect point or comparison or reference in forming a person, attributes or behavior. Next है role and status. A person belongs to many groups, family, clubs, organizations. The person's position in each group can be defined in terms of both roles and status. A role consists of the activity people are expected to perform according to the person around them. So viewers, ये था आज का हमारा लेसन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर लेसन 14। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अपने तमाम घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।